क्या डायरेक्शन है? Your Lordship, your order passed by this honorable court. Your Lordship, may kindly perusal of Annexure C1. Your Lordship, the application of 3912 has been allowed by this honorable court, and that particular application, that compliance has not been committed by the respondent, Your Lordship. हमने सर आवेदन दिया था before माननीय थाना प्रभारी महोदय that the construction is still been going on and the land has been. कौन सा डायरेक्शन है? पेज नंबर Your Lordship C1. पेज नंबर C1 होता है? पेज नंबर 9. Your Lordship, may kindly perusal of Annexure. Your Lordship, that the order 39 rule 1 and 2, Your Lordship, that the interim application. पढ़िए जी. The application under order 39 rule 1 and 2 of the CPC by referring to pages 21 and 22 of the judgment passed by trial court, it is submitted by the counsel for the applicant that the appellant was found to be possession of the land in dispute and appeal was already admitted by the order dated 28/7/2015. Therefore, the respondent may be refrained from interfering the peaceful possession of the land, and which is subjected to 1,50,000, Your Lordship, and that particular amount. पढ़ो तो. Considering the submission made by the learned counsel for the appellant subject to the deposition of 1,50,000 by 31st March of every year to be deposited in CCD of the trial court payable to the respondent number 2 and 3 in equal share. The respondents are refrained from the interfering with the peaceful possession of the appellant. The appellant shall be deposited the man's profit of 1,50,000 of this calendar year by 31st of May 23, Your Lordship. A failure to the deposit of the amount shall be resulted in automatic recall of the order. You were found in possession, है ना? Oh sorry, आप कौन है? सर हमारी जमीन इंक्रोच. नहीं, आपका नाम क्या? राम भुवन ना? You filed second appeal. Your Lordship. Second appeal, whether second appeal is admitted or not? Your Lordship. When it was admitted? Your Lordship, that second appeal is admitted on 28/7/2015. 28/7/2015. Second appeal number 28/7/2015. जी सर. Second appeal number? सर second appeal number है 1226/2009. It is filed by the appellant, Your Lordship. कौन सा है appellant? यही राम भुवन. जी. You are राम भुवन. जी. तो आप 1,50,000 रुपए कब से जमा कर रहे हैं आप? Your Lordship, that particular order has been modified by Honorable Supreme Court. Your Lordship, may kindly a perusal of page number 10, and the amount was deducted to 30,000, and that particular amount has been deposited. 30,000. जी सर. Sir, and Your Lordship, may kindly a perusal of C3, तो हमने 30,000 सर पे कर दिया. इसका क्या हुआ? ये जो सका अपना ये SLP का डिस्पोजल हो गई है फाइनल, या SLP चल रही है अभी? SLP का क्या हुआ? Your Lordship, that if Your Lordship may take this, Your Lordship, I need to take the instruction. कोई बात नहीं. तो अब ये जो ऑर्डर है जी, तो अब क्या कहना है आपका? मान लो आप हाई कोर्ट ने कहा 1,50,000, उन्होंने कहा 30,000, अब आपका क्या कहना है? सर हमारा ये कहना है कि दैट पर्टिकुलर ऑर्डर रिस्पोंडेंट्स का ऑर्डर कर दिया कि दे विल नॉट मेक एनी इंटरफेरेंस इन योर पोजीशन. अब उन्होंने क्या कर दिया? सर उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया, एक झोपड़ी बनाने लग रहे हैं. दे आर कंस्ट्रक्टिंग दैट. Your Lordship, may kindly a perusal of page number 18, Annexure C6. तो हमने on what basis you filed the suit?
Your Lordship, Second appeal में what was your claim? Your Lordship, there was a land dispute between us, and क्या dispute था? Your Lordship, that document is not with us. Your Lordship, may take this matter and pass over. I will tell. कौन सी झोपड़ी बना दी? यहाँ तो साड़ी टंगी हुई है, तो वो बांसों में एक तरफ से एक साड़ी, एक तरफ से दूसरी साड़ी, हो सकता है ना रंग करके डाली हो साड़ी। जी सर, लेकिन सर वो गाँव में रंग करते हो साड़ी पे। जी जी जी, बट सर कहाँ है झोपड़ी? एक साड़ी के नीचे भगोनी रखी है। बट योर लॉर्डशिप, देयर इज अ इंटरिम। कहाँ है इंटरफेरेंस? कैसे पता लगेगा? How will we can say that there is any interference or they are making any interference? जमीन पे साड़ी टांग दी, उससे कोई इंटरफेरेंस होगा? जाने कौन सी जमीन है, क्या है? बड़ा मुश्किल है ये तो। Your Lordship, we have made our complaint before that Thana Prabhari as well as the collector as well. This contempt, no prima facie, no contempt is made out. जो भी आपने किया है, Your Lordship, material you have placed before this court, no contempt appears to have been. Sir, that Your Lordship, that 3912 application has been accepted by this honorable court, that has been allowed by this honorable court. And if some person is building XYZ, कहाँ है building? Where is the building? Sir, but sir, हमारी जमीन पे ये गतिविधियां तो कर रहे हैं, that is not possible. वो कब्जे में रहे होंगे, कर रहे हैं। But sir, order ये है कि वहाँ पे कुछ आप नहीं कर सकते. They're supposed to be, the status quo has to be maintained. So if they're breaching the order which has been passed by this honorable court. अभी तो नहीं, अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर ले आओ, उसके बाद देखेंगे। अभी नहीं, यू फाइल दिस सच टाइप ऑफ बोगस एप्लीकेशन आफ्टर सम टाइम। केवल सामने वाले को डराने के लिए, पुलिस से सामने वाले की जमीन पर कब्जा करने के लिए मैं आपको कंटेम्प्ट नोटिस जारी नहीं करूँ। निश्चित रूप से सामने वाले गरीब आदमी दिख रहे हैं, आप ताकतवर आदमी हो लेकिन कब्जे में नहीं हो। लेकिन सर नहीं समझे आप जी, आप ताकतवर दिख रहे हो और वो कब्जे में दिख रहे हैं, भले ही कोर्ट ने फाइंडिंग कुछ भी दे दी हो। आप पैसे वाले दिख रहे हो मेरे को, क्योंकि वो जिस हिसाब से उसने धोती टांगी हुई है, कोई अपनी धोती ऐसी थोड़ी टांगेगा वहां। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने धोती जो है टांगी हुई है। But your lordship, the order passed by this honorable court dated 18/4/23. आज नहीं बन रहा कंटेंट, बाद में कभी लगा ले। लेकिन हमारे सबमिशन को सर मानते हुए your lordships have allowed the 3912 application. And कंटेम्प्ट नहीं होगा, वो ऑर्डर तो होते रहते हैं। सर interim injunction का जब ऑर्डर है तो उसमें interim injunction order that is passed by this honorable court has not been duly complied by the respondents in lordship. You have not stated anything कि क्या contempt हुआ. You read your entire application. Grounds are that it is very surprisingly that despite the order passed by Honorable Single Bench thereafter and also the application submitted by the petitioner itself along with the Honorable Court orders, the present respondent are sitting tied over the matter. यानी कहाँ से आपने ये जो है कोई सी कंटेंट पिटीशन उठा ली, उसको जो है पेस्ट कर दिया। Respondents are sitting tied over the matter. It has been directed to the respondent not to interfere with peaceful possession. Respondents are sitting tied over the matter. ये कहाँ से हो जाएगा? The respondent is forcefully interfering the peaceful possession of the appellant. Despite various complaints, no action has been taken by the authority. Authority क्या बोलेगी? Therefore, the action may be taken against respondent. The copy of photograph after being directed by this court to maintain a status quo, the respondent should be held accountable for non-compliance. क्या करा उन्होंने? ये दिख रहा है पड़ा हुआ वैसी? permitted to withdraw file property constitute of the case. किसी और बेंच पे लगे, वहाँ से नोटिस करवाइएगा। So after arguments for some time, the learned counsel for the petitioner prays for withdrawal of this contempt petition. With liberty to file afresh as and when new cause of action arises. कुछ अच्छे से पेश करो, ऐसा ना तो प्लीडिंग है ना एविडेंस है।
सामने वाला आया, हमने ऐसा करो, एक बार कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करा दो, फिर थानेदार तो अपना बैठा हुआ है, अपन उसको बेदखल कर देंगे। अरे आप भैया क्यों, मतलब ये सोचो, आपसे थानेदार ने कहा एक बार केवल कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करा रहा, फिर अपन निपट लेंगे, और आप यहाँ चले आए। चलो।